साथ रहा है। आज के कार्यक्रम के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री का यहाँ पे 4 बजे आगमन हुआ है। अभी जो राजघाट का किला है कोंकण क्षेत्र में, वो जो किला है जो छत्रपति शिवाजी महाराज को डेडिकेटेड है, वहाँ पे वो आए थे, अपनी आदरांजलि उन्होंने यहाँ पे दी। उनके साथ रक्षा मंत्री भी थे और साथ में महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस वो थे, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जितने भी जो पॉलिटिकल एरिया के लोग हैं वो यहाँ पे थे। अभी वो यहाँ पे जो है तारकर्ली जाएंगे, जहाँ पर मुख्य कार्यक्रम जो है नौसेना का वो तारकर्ली में रखा गया है, जो कि जिसमें कि कई सारे डेमो जो है डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो भारतीय नौसेना की तरफ से किए जाएंगे। समुद्र तटीय इलाका है, नौसेना का एक काफी कहें तो काफी रिच हेरिटेज इंडिया को रहा है और छत्रपति शिवाजी महाराज को उसका फाउंडर माना जाता है। जो नवंबर 2022 में हमने देखा भी था कि किस तरीके से नौसेना का जो ध्वज था उसमें उसका निशान बदलकर वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मुद्रा थी उसको वहां पे लगाया गया था। तो अगर आप देखें तो कई ऐसे मौके हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सब चीजों का जिक्र किया है और खास करके आज का दिन ऐसे समय में जब नौसेना काफी मॉडर्न हो चुकी है, काफी अपडेटेड हो चुके हैं, मेक इन इंडिया उसमें आ चुका है, कई सारी पीआईएल स्कीम्स उसमें आ चुकी हैं, बहुत सारे स्तर पे जो है नौसेना को सुदृढ़ किया जा रहा है, चीजें बदल रही हैं। मेक इन इंडिया के साथ साथ वोकल फॉर लोकल का भी मंत्र है। कुल मिलाकर सिर्फ रिलायंस के मामले में भारत आगे क्या करेगा, प्रधानमंत्री वहां पे एक संबोधन भी करने वाले हैं। और ऐसे में जब कई सारी चीजें चल रही है, रक्षा मंत्री जो है वो भी जो राजनाथ सिंह है वो भी साथ में है, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी योगेश, प्रधानमंत्री ने शिवाजी महाराज की एक चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। जी रमा, यहाँ पे एक चित्र प्रदर्शनी रखी गई थी, इसके साथ प्रधानमंत्री को छत्रपति शिवाजी महाराज की एक तस्वीर जो है वो भी यहाँ पे की गई है। प्रदर्शनी का अगर जिक्र करें तो क्योंकि ये जो पूरा इलाका है, चाहे वो आप रायगढ़ किला देखिए हो, रत्नागिरी में आप देखें, सिंधुदुर्ग में देख लें या फिर कोल्हापुर में आप देख लें, ये जो बेसिकली और किसान उसके यहाँ पे सजीव रूप में दिखेंगे, जिसको देखकर कोई भी भारतीय को होगा कि किस तरीके से किला आया गया, किस तरीके से किला की बराबर आप देख तो काफी सारी रीजनिंग जो है वो रीजनिंग किस तरीके से की गई कि अगर हमला होता है तो कैसे निकला जाएगा, गुफाएं कहाँ पे होगी, निर्देशक कहाँ पे होंगे, कहाँ पे किस तरीके की रणनीति बनेगी, इन सब चीजों को लेकर जो प्रदर्शनी थी वो यहाँ पर आयोजित की गई थी, उसका भी अवलोकन उन्होंने किया। जो बाकी जो उनके साथ गणमान्य लोग थे वो भी साथ में थे, उन्होंने इसका अवलोकन किया और अब वो तारकर्ली की तरफ जहाँ पे नौसेना दिवस का मुख्य कार्यक्रम है वो उसकी तरफ प्रधानमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं। रमा, बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नौसेना दिवस के मौके पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण ये अपने आप में कितना सिंबॉलिक है, कितना महत्वपूर्ण है? रमा, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री की अगर आप बात करें तो रिसेंटली दिल्ली में किताब का भी अनावरण किया गया था, जिसमें कि आज का शिवाजी नरेंद्र मोदी इस तरीके से किताब थी जिसका अनावरण जो है वो भी दिल्ली में किया गया था। अगर आप प्रधानमंत्री की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो नवल इंसान है उसमें तो उन्होंने चेंज किया, जो कॉलोनियल पास्ट था, जो औपनिवेशिक निशान उस पे था उसको उन्होंने हटाया, जो कि पंचप्रण में भी शामिल है कि औपनिवेशिक जो सोच है उससे बाहर निकला जाएगा। इन सब के अलावा अगर आप देखें तो उन्होंने कई मौकों पर मराठा वॉरियर किंग छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र किया है और कई बार उन्होंने कहा है कि जो प्रशासनिक दक्षता छत्रपति शिवाजी महाराज में थी वो प्रेरणीय थी और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। एक बार प्रधानमंत्री का ही मैं आपको कोट बताता हूं कि वेलफेयर ऑफ द स्टेट एंड इट्स पीपल वाज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज रूल। ये So we are going to have 7 temples here.
In this area, just outside Perkota, there will be separate temples, not together. 7 separate temples will be built. कि इस पूरे स्ट्रक्चर में आयरन कहीं नहीं इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि आयरन की लाइफ जो है वो 94-95 ईयर्स होती है. हम तो 1000 ईयर्स का टेम्पल बना रहे हैं. 3500 लेबर is working day and night. People of my generation, even your generation, younger generation, and many generations who have gone, they never ever thought that the Ram temple will be a reality. Not a single pie has come from any government agency for the construction of the temple. The first Land Acquisition Act, it was implemented with the advice, aid and advice of ministers and myself. But the beauty of this Prime Minister is, when I went to tell him that please do not issue the third ordinance on this matter, he looked at me. He said, "You are telling me?" Not even once he would use the word, "You guys are responsible." He takes the full responsibility for what happens. His speech on my farewell, I couldn't believe. I was in tears. The cabinet ministers and secretaries to the government who were invited, they couldn't believe. Prime Minister spoke for 45 minutes and he spoke only about me. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Thank you for liking, subscribing, and sharing with people who you think will benefit from these conversations. My guest today has been entrusted with the task of completing the construction of the Ram temple in Ayodhya. Mr. Nripendra Mishra is one of the most experienced bureaucrats of our times. He was Principal Secretary in the Prime Minister's office from 2014 to 2019. In the second term of Prime Minister Modi, when Mr. Mishra asked that he be relieved of his duties in the PMO, the Prime Minister accepted his resignation and tweeted, "Nripendra Mishra is among the most outstanding officers who has a great grasp of public policy and administration. When I was new to Delhi in 2014, he taught me a lot and his guidance remains extremely valuable." Unquote. Mr. Mishra couldn't really hang up his boots because he was soon appointed as the chairman of the Executive Council of the Nehru Memorial Museum and Library, and then as chairman of the Ayodhya Ram Mandir Construction Committee. So let's get chatting with the man himself who's entrusted with this task. He has to complete the construction of the Ram temple by January 2024. Mr. Mishra, thank you so much for being part of the podcast. I'm delighted that you could find the time and come to the studio here because I know that the deadlines are really sharp with the Pran Pratishtha to happen in January 2024. So I'm guessing that your work is like literally 24/7 to keep an eye on everything. But before I begin to ask you about the timelines and the construction process, one question which, for our overseas viewers and for our young viewers who are not very aware, would I say, of what it means to install a deity, what it means to do a Pran Pratishtha. It's not just bringing a deity and keeping there. What does the process mean? I know neither you nor I are priests, but a person who's the man in the hot seat, I'd want you to explain a little bit about what the process is. Actually, it's a good question. And as you said, particularly for those who are not in some manner sort of educated will be a wrong word, but they have not yet, have developed the kind of belief that people who are there and are attached with the temple will have. So now the process is that consecration means that the murti which is being sculpted today at the moment in Ayodhya, and hopefully it will be ready by middle of December, and we are
going to have one of the three which is being sculpted there. So that will start its journey of consecration sometime